Good morning students. Today we are going to start a new chapter, electricity and circuit. So in this chapter you will learn about electricity, its uses and about the circuit. So first of all we will discuss what is electricity. So electricity is what? It is flow of charge. What is electricity? Flow of charge. And it flows through wires. We are aware that electricity which is flow of charge, it flows through wires. किसके through flow करती है electricity? Via wires, right? So wires are there for the flow of charge. So electricity is what? Flow of charge. Or I hope this is clear to you that electricity is flow of charge. Dear students, you are observing that in our day-to-day life we are using electricity for many purposes, like for running the pumps to lift up the water. पानी को ऊपर लाने के लिए हम जो pumps use करते हैं, we are using electricity for running that pumps, for running those pumps. उन pumps को run करने के लिए we are using electricity. Now what other uses we are doing with the help of electricity? We are lighting the rooms, markets, offices. After the sunset, whatever light we use, it is with the help of electricity. That light is produced with the help of electricity. But sometimes students, you know that there is failure in electricity. Electricity is provided to us by the power station. Power station से electricity आती है. Sometimes when the electricity fails, what happens? What we do? At the evening time, if electricity fails, we very oftenly use torch. हम तब क्या use करते हैं? Torch use करते हैं जब electricity failure होता है. ठीक है? So ये जो torch होते हैं, इनमें current कहाँ से आता है? What is there to provide current to these torch? There is a small bulb in the torch which is light up with the help of electric current produced by the cell. So what is there in the torch which produce electric current? That is cell. Now the question is how cell may produce electric current. So how cell produce electric current? There are chemicals stored inside the cell which produce the current. So an electric cell produce electricity from the chemicals stored inside it. So an electric cell produce electricity by the chemicals stored in it. If you have seen a cell, there are two terminals in the cell, positive and negative. Let me draw a cell. What type of structure we see? If I draw a cell, there are two terminals of cell if you have observed. There is a metal cap and there is a metal disc at the base. So metal cap, it is the positive terminal of the cell. This is a diagram of a cell. A cell has two terminals, positive and negative. So the reason having the metal cap, it is positive terminal of the cell, and the metallic disc at the base, this is the negative terminal of the cell. So what I am telling you, there are two terminals in a cell. Student, if we connect these two terminals with the wire, what will happen? Current will flow, right? So there are two terminals in the cell, and in bulb also have two terminals. So let us see the diagram of a bulb. What type of structure bulb have? Now we will draw the diagram of a bulb. So there is a metallic base in the bulb, right? And bulb is made up of
glass. This is the glass case. Glass case. And this is the metallic part, metallic base of the bulb. So what is there in the bulb? So I am telling you that in a bulb there are two terminals. One terminal here at the metal base and one here. So here in the center of the metal, one terminal is there, another terminal is at the tip of the base of the cell. So base of the cell have two terminals, one here and one here. So what are these? These are the terminals of bulb. So why there are terminals in cell and bulb? So when terminals of cell and bulb are connected properly, then current flows and bulb glows. So this we will discuss in the electric circuit. First you see the structure of a bulb. So there are two terminals in a bulb. Glass case is there. Inside the glass case, noble gases like argon is filled, right? So there is argon to prevent the oxidation, right? And here, this is a thin filament made of tungsten. So there is a thin filament in the bulb which glows. When electric current passes through the bulb, then this thin filament glows. And this filament is what? It is made up of tungsten. When current flows through this filament, it glows and gives off light. Right? So this is the structure of a bulb. I hope this is clear to you. Now we will discuss what is an electric circuit. Students, electric circuit is that path on which current flows. How to define electric circuit? Electric circuit क्या होता है? It is a path. Electric circuit. It is a path on which electric current flows. To understand more, we will draw a diagram to understand what is an electric circuit. So what things we are going to take in an electric circuit? We are going to take we use a bulb. To make an electric circuit, we need cell, bulb, wires and a switch. So there are four things which we require to make an simple electric circuit. So what is an electric circuit? Electric circuit is the path on which electric current flows, right? So now let's discuss how to make an electric circuit. First of all, the four thing which we need, हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो चार चीजें चाहिए, उसके हम सिंबल्स बनाएंगे सबसे पहले. For this we need a bulb. And how to draw the bulb? This is the symbol for the bulb. Right, students? This is the symbol for bulb. Then about cell. For cell we draw a longer line which shows the positive terminal of the cell. आपको बताया था कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जब हम सिंबॉलिक वे में सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो शॉर्ट थिक लाइन होती है, शॉर्ट थिक लाइन, it represents negative terminal of the cell. So in this way we symbolize
we draw the symbol of a cell. For wire, we simply use line, right? And for switch, how we represent switch? If switch is open, we show it like this, and if switch is closed, we show it like this. So now let's, with the help of these symbols, draw an electric circuit. So how to draw an electric circuit? See students, there is a cell. This is the cell, right? We connect the cell with the two terminals of the bulb, like this. Here we can represent the switch. Now, to show the flow of current, we always show the arrow from positive towards the negative terminal. कभी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो जो फ्लो ऑफ करंट है हम पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं, राइट? कन्वेंशनली वी शो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? सो हियर इज द बल्ब, हियर इज द सेल, हियर इज द स्विच. दिस इज क्लोज, राइट? दिस इज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अगर स्विच क्लोज है तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है और इसमें जो है कॉन्टिन्यूसली एक पाथ मिल रहा है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस पाथ. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस पाथ electric circuit is continuous path on which current flows. On which current flows. So student, here you can see this is a closed electric circuit. The electric circuit is what? Closed. So electric circuit is closed here, current is flowing through here, so we call it closed electric circuit. But student, if the switch is open, then the path of the electric current will break down. समझ आ रहा है आपको कि अगर स्विच ओपन हो, ठीक है, अगर स्विच यहाँ से ओपन होगा तो करंट को फ्लो करने के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा. ये कॉन्टिन्यूअस पाथ था, तब बल्ब ग्लो कर रहा था, और बल्ब ग्लो करता है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ठीक है, और जब ग्लो नहीं करता तो हम नहीं शो करते. अब ये जो सर्किट है, यहाँ से स्विच ओपन है, ब्रेकडाउन हो गया, अब इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो अब ये क्या कहलाएगा? क्लोज नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ओपन सर्किट. वी विल कॉल इट ओपन सर्किट. ठीक है बेटा? तो सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिससे करंट फ्लोज करता है, ठीक है, और अगर सर्किट ब्रेकडाउन हो जाए कहीं से भी तो करंट फ्लो नहीं करता. तो हियर स्विच इज ओपन and now the circuit is not complete. This is the diagram of open electric circuit. Now the switch is open. In this way we draw open electric circuit. Previously we have drawn closed electric circuit. I hope now the electric circuit is clear to you that it is a continuous path which allows electric current to flow through it. Right? So this was about electric circuit. Student, if we use any material which allows the current to pass through it, we call it conductor, right? So to find out whether an object is insulator or conductor, we can use the material here in the circuit. If current flows, then it is conductor. If current does not flow, it is insulator. So what I am telling you, दो तरह के substances होते हैं, material होते हैं. जो करंट को फ्लो करने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, और जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं. ठीक है? तो अब आप देख रहे हो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर है,
मेटल वायर है, कॉपर वायर है इसमें। तो जो मेटल वायर्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से फ्लो होने देती हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे रबर यूज करें या वुड यूज करें इन बिटवीन द सर्किट, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज वुड, प्लास्टिक, रबर, दीज आर इंसुलेटर. सो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स on the basis they allow current to pass through them or not. इस आधार पे कि करंट को कोई सब्सटेंस अपने में से पास होने देता है या नहीं होने देता है, देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स and other one is insulators. So students, the material, or you can say the substance which allow current to pass through it is called conductor, and the material which does not allow current to pass through it is called insulator. I hope this is clear to you कि अगर मटेरियल में से करंट पास होता है तो वो कंडक्टर होता है, अगर उसमें से करंट पास नहीं हो रहा तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स, मेटल्स आर मोस्टली, ऑल ऑफ द मेटल्स they are generally conductor, leaving one or two metals, rest of the metals are conductor, right? And insulator, I am telling you that wood, rubber and plastic, these are insulators. So conductor and insulator, I think this topic is clear to you. If the material allows the current to pass through it, it is conductor. If the material does not allow current to pass through it, it is insulator. So what are the uses of conductor and insulator? Conductors we are using for electricity to flow through it, to current to flow through it. कंडक्टर हम यूज करते हैं ताकि करंट फ्लो कर पाए, ठीक है. और इंसुलेटर हम कब यूज करते हैं, इफ वी आर वर्किंग with the electric equipments, electric wires, then we use plastic gloves. You might have seen that electricians, they are using plastic or rubber gloves while working with the electric switches. जब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन, तो क्या पहनते हैं, वो रबर ग्लव्स पहनते हैं. वाई? बिकॉज रबर इज इंसुलेटर एंड दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. इफ यू टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, you can get an electric shock. So what you do? You use rubber gloves or you use plastics to handle with the electric equipments in order to prevent the electric shock. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स पे या इलेक्ट्रिक स्विचेस में या किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए काम को यूज़ कर रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. इलेक्ट्रिशियन जिस तरह से रबर ग्लव्स यूज़ करता है, हमें भी रबर या प्लास्टिक यूज़ करके और तभी उन्हें हैंडल करना चाहिए इलेक्ट्रिक स्विचेस को, क्योंकि अदरवाइज इट कैन गिव अस एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड समटाइम इट इज वेरी डेंजरस. इट कैन इवन कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन. सो वी हैव टू केयरफुली हैंडल. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ ड्राई सेल, राइट. आई हैव टोल्ड यू दैट कि सेल के अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर इनसाइड द सेल, वो अब हम देखते हैं कि सेल में किस तरह का अरेंजमेंट होता है. Here I am drawing a dry cell. Outermost case of the cell, it is made up of zinc. So this is the zinc case. This is the zinc case. It acts as the negative terminal of the cell. Here at the, this is the metallic disc, base of the cell, which acts as a negative terminal. So how we represent negative? Minus VE. It means negative. This is the negative terminal of the cell. So this is what? This is made of zinc. Outermost case, it is called zinc case. सेल का जो बाहर का केस है वो किसका बना हुआ है? जिंक का. इसे हम जिंक केस कहते हैं, राइट. Here is a metal cap. It is attached with the carbon rod. This is the carbon rod, or you can say graphite rod.
इसे आप ग्रेफाइट रोड या कार्बन रोड कह सकते हैं क्योंकि मेटल कैप से अटैच है। सो मेटल कैप इज व्हाट? दिस इज मेटल कैप एंड इट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज कार्बन रोड और यू कैन से ग्रेफाइट रोड। इसे आप कार्बन रोड भी कह सकते हो और ग्रेफाइट रोड भी कह सकते हो। Okay, next there are chemicals inside the cell. Close to the carbon rod, there is a chemical. Here is a chemical. We can represent it like this. What chemical is there? There is manganese dioxide and carbon. So there is the mixture of manganese dioxide. मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीज के लिए सिंबल होता है Mn, Mn फॉर मैग्नीज, एंड डाइऑक्साइड के लिए O2। सो यहाँ किसका पेस्ट है? मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, राइट? एंड आउटसाइड हेयर बिटवीन जिंक केस एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, इनके बाहर जो है एक और पेस्ट है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का सिंबल, अमोनियम का फार्मूला है NH4 और क्लोराइड के लिए Cl। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर इन अ ड्राई सेल? दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सेल, और यू कैन से दिस इज ड्राई सेल व्हिच वी यूज इन टॉर्च for current, right? So what is there in the dry cell? There is a metal cap which acts as positive terminal. It is connected to the carbon rod, and the base, the metal disc, this is negative terminal. After carbon rod there is a paste of manganese dioxide and carbon, and outer to it there is ammonium chloride, and there is the zinc case outside the cell, outside these material. So in this way, this is the diagram of a cell where the chemicals react with each other. The chemicals, they react, they produce electric current, and when the chemical gets finished, then torch, it doesn't give light because the current which was produced by the chemicals is now no more produced here. ठीक है, तो जब तक केमिकल से रिएक्शंस होती रहेंगी ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता रहेगा सेल, और जब केमिकल सारे यूज अप हो जाएंगे तो इट स्टॉप वर्किंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you are free to ask in your doubt class. I hope students you all have understood well, but you are free to ask your doubts in your doubt class. Thank you. Have a good day.